Hello everyone. So today we'll be dealing with the numerical questions of oversubscription, and this is all the journal entries that we had already discussed in our previous video. Let us start with the question. Crystal Hospitality Limited invited applications for 1 lakh equity shares of rupees 50 each, payable as rupees 10, 15, 15 and 10. Applications were received for 4 lakh shares on 1st January 2018 and allotment was made on 1st February 2018. 1 lakh shares issue किए थे, 4 lakh applications receive हुई हैं. It means it's a situation of oversubscription. Now how we have to deal with this? We are having three alternatives. In the first one, we had all rejected altogether all the X applications. In the second situation, we have made pro-rata allotment with the 25% of the applications, and in the third situation, we have made pro-rata allotment with the few of the applications and refunded to the remaining. So let us see how the accounting treatment and journal entries will be passed for all these situations. First situation, the company has issued 1 lakh shares of rupees 50 each. Company has issued 1 lakh shares of rupees 50 each, payable as rupees 10 on application, rupees 15 on allotment, rupees 15 on first call and rupees 10 on second call. The applications received were 4 lakh shares. कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इशू किए थे, एप्लीकेशंस उसे 4 लाख शेयर्स की रिसीव हुई हैं. इट्स एन ऑब्वियस थिंग दैट दिस इज अ सिचुएशन ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन. एंड द फर्स्ट alternative we are given, the first question has said that all the excess applications have been rejected and the 1 lakh shares have been allotted. Now we have to pass the journal entry. First entry, on January 1st, bank account debited to share application account being application money received rupees 40 lakh. How you have got this 40 lakh? जो आपको total applications receive हुई हैं उसे आप multiply कर देंगे with the rate of application. So 4 lakh at the rate of 10, 4 lakh at the rate of 10 rupees 40 lakh have been received. The second journal entry will be passed on February 1st because it is given in the question, that is the allotment of shares have been made on February 1st. So second journal entry we always pass for the allotment of shares. Share application account debited to share capital account to bank account, because it has said in the question that all the X applications have been rejected. So the X application has to be refunded. So how much amount has to be shown in front of share capital? जितने shares हमने issue किए थे उतने shares पे जो एप्लीकेशन का रेट है उस रेट से जो अमाउंट आता है 10 लाख रुपीस वो तो आ जाएगा आपका कैपिटल के सामने. और जितने शेयर्स आपने रिजेक्ट किए दैट इज रुपीज 3, दैट इज 3 लाख शेयर्स. सो 3 लाख पे जो आपने एप्लीकेशन का रेट है 10 रुपीस के रेट से 30 लाख रुपीस क्या हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा. नाउ लेट अस मेक द अलॉटमेंट मनी ड्यू. Share allotment account debited to share capital account being allotment money due. How much amount will you will make due? Rupees 15 lakh. कैसा आएगा 15 lakh? Total 1 lakh shares at the rate of 15. बात जो मेन ध्यान रखने की है यहाँ पे वो ये, हमें 4 lakh applications रिसीव हुई थी. सॉरी. So on these 4 lakh applications 10 rupees के रेट से हमने मनी रिसीव किया और जो भी एक्सेल एप्लीकेशन थी उनको यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया. अब अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे, सेकंड एंड फाइनल कॉल पे जब भी हम मनी ड्यू करेंगे वो एक्चुअल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस इशूड, एक्चुअल नंबर ऑफ शेयर्स इशूड पे ही ड्यू करेंगे. सो ऑन 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 15 अलॉटमेंट का मनी ड्यू करेंगे हम. ऑन 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 15 रुपीज 15 लाख हैव बीन मेड ड्यू. और जितना आप ड्यू करेंगे उतना रिसीव भी करेंगे. बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. 15 लाख आपने ड्यू किया, 15 लाख आपने रिसीव भी कर दिया. लेट अस मूव फर्दर. Share first call account debited to share capital account again 15 लाख. कहां से आया? फिर से वही जो शेयर्स आपने इश्यू किए थे उस पे 15 रुपीस के रेट से. जब आप अलॉटमेंट का मनी ड्यू कर रहे हैं तो 1 लाख एट द रेट ऑफ 15. जब आप फर्स्ट कॉल का मनी ड्यू कर रहे हैं तो 1 लाख एट द रेट ऑफ 15. जब आप सेकंड कॉल का मनी ड्यू करेंगे तो 1 लाख एट द रेट ऑफ 10. So share first call account debited to share capital account 15 lakh and bank account debited to share first call account 15 lakh. Now next two journal entries you have to pass, and so I can check whether you have understood the concept or not. The next two journal entries will be for second and final call, that is share second and final call account debited to
share capital account. How much amount will be shown on 1 lakh shares at the rate of 10 lakh will be shown in that one. And the next last journal entry will be bank account debited to share second and final call account, rupees 10 lakh will be received. So let us deal with the second situation. The second situation says that again number of shares issued is 1 lakh, number of applications received is 4 lakh, and the pro-rata allotment have been made with 25% of shares. So how much is the 25% of 4 lakh? 25% of 4 lakh will be 1 lakh shares. हमने 1 lakh शेयर्स इशू किए थे, टोटल एप्लीकेशंस 4 लाख रिसीव हुई थी और उसमें से 25% शेयर्स को ही हमें अलॉट करना है। हर पर्सन, जिस पर्सन ने 4 शेयर्स डिमांड किए होंगे उसको हमने 1 शेयर दे दिया, जिस पर्सन ने 8 शेयर्स डिमांड किए होंगे उसको 2 शेयर्स दे दिए, यानी 25% शेयर्स हमने अलॉट किए। टोटल हमने 1 लाख शेयर्स अलॉट किए हैं। लेट अस सी हाउ द जनरल एंट्रीज विल बी पास्ड। द फर्स्ट जनरल एंट्री विल बी एग्जैक्टली द सेम, that is bank account debited to share application account with rupees 40 lakh. How you have got this rupees 40 lakh? On 4 lakh shares at the rate of rupees 10, complete rupees 40 lakh have been received. After that, now we have to adjust. यहाँ पे हमने शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को क्रेडिट किया है 40 लाख से, तो यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट भी हो जाएगा 40 लाख से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात है कि शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट आएगा, हाउ मच अमाउंट विल बी एडजस्टेड टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड हाउ मच अमाउंट हैज टू बी रिफंडेड। सो द थिंग इज शेयर कैपिटल में आएगा जितने शेयर्स हमने इश्यू किए थे उस पे जो एप्लीकेशन का रेट है, यानी 1 लाख शेयर्स पे 10 रुपीज की रेट से 10 लाख रुपीज आ गया आपका शेयर कैपिटल में। शेयर अलॉटमेंट में कितना जाएगा, जितने शेयर्स हमने अलॉट किए उतने शेयर्स पे अलॉटमेंट की रेट से। सो द नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड इज 1 लाख। ऑन दीज 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 15 लाख आ गया आपका अलॉटमेंट में। एंड द बैलेंसिंग फिगर विल बी रिफंडेड as there is no further need of this amount. Then the journal entry for allotment, the journal entry for first call, the journal entry for second and final call, all the journal entries will be exactly the same. There will not be any change in all the other journal entries. Just the change will be in this second journal entry where you need to adjust the excess application money in various stages. Let us deal with the third situation. The company has issued 1 lakh shares. Number of applications received is 4 lakh, of which 2 lakh applicants have been rejected. 80,000 applications have been allotted in full, and to the remaining applicants 20,000 shares have been allotted. You can read to the language of the question carefully, because language can only help you to get the correct solution. So try to understand the language of the question carefully. Read it carefully. Now, the journal entry will be first one, that is bank account debited to share application account 40 lakh. How we have got 40 lakh? That is 4 lakh. That is total number of applications received at the rate of rupees 10. That is rupees 40 lakh. The second entry will be share application account debited to share capital account, to share allotment account, to calls and advance account, and to bank account, being shares allotted and excess application money adjusted. Now, how we have got all these amounts? How we have got all these amounts that have been hidden in this particular table? This table will be prepared in the form of working note in the examination, and you can just check this 3 lakh in front of share allotment. This is the column for allotment. This is rupees 3 lakh. This is the calls and advance. This is the column for calls and advance. This is the total 5 lakh, and this is the column for bank. In the refund, this is rupees 22 lakh. So now you just need to concentrate over this table, how we have to present the items in this table. क्योंकि अगर आपको ये टेबल आज समझ में आ गई तो ये समझ लीजिए आपके इस चैप्टर का 50% पार्ट कवर हो गया. So just let us start with this. We are having 3 categories for the pro-rata allotment. Number of shares applied. The persons who had applied, this is first column is for applied, the second column is for number of shares allotted. The persons who had applied for 2 lakh shares have been rejected and were not allotted anything. जिन्होंने 2 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उनको हमने कितने शेयर्स अलॉट किए, उनको हमने रिजेक्ट कर दिया और उनको हमने शेयर्स अलॉट नहीं किया. The persons who had applied for 80,000 shares were allotted in full. जिन्होंने 80,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उनको हमने पूरा 80,000 शेयर्स ही अलॉट किया है. And the remaining
20,000 shares were allotted on a pro-rata basis. तो यहाँ पे अप्लाइड का टोटल कितना होना चाहिए 4 लाख और अलॉटेड का टोटल होना चाहिए 1 लाख. तो रिमेनिंग 20,000 को हमने कितना अलॉट किया, सो 1,20,000 आपके पास में आया है एज अ बैलेंसिंग फिगर. दैट इज 2 लाख प्लस 80,000, 2,80,000, 4 लाख माइनस 2,80,000, यू हैव गॉट 1,20,000 एज द बैलेंसिंग फिगर. तो जिन लोगों ने 1,20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उन्हें हमने प्रो रेटा बेसिस पे सिर्फ 20,000 शेयर्स के अलॉट किए हैं. नाउ द नेक्स्ट कॉलम इज फॉर द एक्सेस एप्लीकेशंस, जिन्हें हमने पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया. यहाँ पे नंबर ऑफ एक्सेस एप्लीकेशंस है 2 लाख. The persons who had applied for 80,000 shares were allotted 80,000 shares. There is no excess applications. The persons who had applied for 1,20,000 shares have been allotted only 20,000 shares. So we are having 1 lakh as excess applications, and the total excess applications we are having 3 lakh. Obviously, 4 lakh applications receive हुई थी, 1 lakh shares हमें allot करने थे तो 3 lakh excess applications हो गई. Now let us calculate the excess application money. Excess application money at the rate of rupees 10. What is the rate of application? Rupees 10. So excess application money on the excess applications 2 lakh, the excess application money is 20 lakh. On the excess applications of 1 lakh, the excess application money is 10 lakh. That is total rupees 30 lakh. हमें नजर आ रहा है कि हमें यहाँ रिसीव होने चाहिए थे 10 lakh, क्योंकि 1 लाख शेयर्स पे 10 रुपीज के रेट से 10 लाख रिसीव होना चाहिए था और 40 लाख रिसीव हो गया. सो ऑब्वियसली व्हाट इज द एक्सेस एप्लीकेशन मनी? इट इज 30 लाख इन टोटल. अब आगे आप इस एक्सेस एप्लीकेशन मनी को कहां पे एडजस्ट कर सकते हैं? यू कैन ट्रांसफर दिस एक्सेस एप्लीकेशन मनी टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट. You can transfer this excess application money towards calls in advance, and you can transfer this excess application money, that is you can refund it, you can just pay back that amount back to the shareholder or the share applicants. Now let us see how much amount will be adjusted and where. जिन्हें आपने शेयर्स अलॉट नहीं किए, जिनके शेयर्स आपने रिजेक्ट कर दिए, उनका एक्सेस एप्लीकेशन मनी आप डायरेक्टली रिफंड कर देंगे पूरा का पूरा. ठीक है. जहां पे हमारे पास में एक्सेस एप्लीकेशन मनी नहीं है, तो जब एक्सेस एप्लीकेशन मनी नहीं है तो आगे तक तो डैश होना ही है, बात ही खत्म हो गई. जहां पे हमने पूरे शेयर्स अलॉट किए थे, देयर वाज नो एक्सेस एप्लीकेशंस, देयर वाज एनी एक्सेस एप्लीकेशन नॉर देयर वाज एनी एक्सेस एप्लीकेशन मनी, सो इट विल बी निल. नाउ जहां पे हमने प्रो रेटा अलॉटमेंट किया है, दिस इज द कैटेगरी ऑफ प्रो रेटा अलॉटमेंट. एक्चुअली फाइन, दिस इज द कैटेगरी ऑफ प्रो रेटा अलॉटमेंट. यहां पे एक्सेस एप्लीकेशन है 1 लाख, एक्सेस एप्लीकेशन मनी है 10 लाख. Now how much amount will be transferred towards allotment? तो allotment का रेट है 15 रुपीज का और हमने शेयर्स कितने अलॉट किए हैं? The number of shares allotted in third category is 20,000. So 20,000 शेयर्स पे 15 रुपीज के रेट से हमारी रिक्वायरमेंट है 3 लाख की, यानी कि इस 10 लाख में से 3 लाख तो अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाएगा. ठीक है. इसके बाद में देखेंगे कॉल्स एंड एडवांस पे. अब याद रखने वाली बात यह है कि यहाँ पे फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल को, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फाइनल कॉल, इन सारे कॉल्स को हम सेपरेट नहीं करते हैं, बल्कि कॉल्स इन एडवांस का ये कि कंबाइंड कैटेगरी होता है. सो 15 प्लस 10 25 रुपीज का टोटल अमाउंट ले लेंगे हम. कॉल्स एंड एडवांस का रेट 25 की रेट से. अगेन कितने शेयर्स हम अलॉट किए इस थर्ड कैटेगरी में? 20,000. ऑन दीस 20,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 25 हमारी रिक्वायरमेंट है 5 लाख रुपीज की. सो इस 10 लाख रुपीज में से 3 लाख अलॉटमेंट पे गया एट द रेट ऑफ 15, और इसी 10 लाख रुपीज में से 5 लाख हमारा कॉल्स एंड एडवांस पे गया. कितना हो गया? 3 प्लस 5 8 लाख, यानी 10 लाख में से सारा एडजस्ट करने के बाद भी 2 लाख रुपीज अभी भी हमारे पास में एडिशनल कैश बचा हुआ रह गया, जिसे हमें क्या करना है? रिफंड करना है. सो दिस विल बी द टोटल अमाउंट. 22 lakh will be the total amount refunded. Let me tell you once again, in the pro-rata category, the persons who had applied for 1,20,000 shares were allotted 20,000 shares only. So what is the excess applications? 1 lakh is the excess applications. 10 lakh is the excess application money at the rate of rupee 10, of which 10 lakh, rupees 3 lakh have been adjusted towards allotment, rupees 5 lakh have been adjusted towards calls and advance, and remaining rupees 2 lakh have been refunded. ये 3 lakh कहां से आया? जितने शेयर्स आपने अलॉट किए थे उतने शेयर्स पे अलॉटमेंट की रेट से, जितने शेयर्स आपने अलॉट किए थे उतने शेयर्स पे कॉल्स एंड एडवांस की रेट से ये अमाउंट आपके पास में आ जाएंगे, और रिमेनिंग जो बचा हुआ बैलेंसिंग फिगर है वो आपका रिफंड हो जाएगा. बस ये तीनों फिगर्स देख लीजिए आप. अलॉटमेंट का टोटल 3 लाख, तो ये देखिए ये अलॉटमेंट के सामने हमने लिखा है 3 लाख. उसके बाद में कॉल्स एंड एडवांस का टोटल 5 लाख, तो कॉल्स एंड एडवांस के सामने हमने लिखा है 5 लाख, और रिफंड का टोटल 22 लाख, तो ये बैंक के सामने हमने लिखा है 22 लाख. अगर टेबल आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाती है तो एंट्रीज में तो अमाउंट इजीली आप भर ही देंगे, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं है. इसके बाद की जो जनरल एंट्रीज हैं, फॉर मेकिंग द अलॉटमेंट मनी ड्यू, फॉर रिसीविंग द अलॉटमेंट मनी,
for making the first call money due, for receiving the first call money, for making the second call money due, for receiving the second call money. All the journal entries will be exactly the same as we had already studied in the previous part. So I hope you all have understood this whole concept thoroughly. फिर भी अगर कोई डाउट बचता है, कोई क्वेरी है माइंड में, तो आप कमेंट कर सकते हैं. थैंक यू.